Can we start session? यस आप स्टार्ट कर सकते हैं. यस मेरी तरफ से ओके आप लोग देख लें. जी सर क्या हम हम start? लाइव हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. आप स्टार्ट करें. आप सर लाइव हैं. आप Okay, sir. थैंक यू. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, everyone. How are you? And it's my pleasure to welcome all the audience to session on speed breeding and high throughput phenotyping. So this session is organized by UHP, AgriWing, and collaborated with Botanical Society of Agriculture, Faisalabad. Now we introduced our honorable speaker, Dr. Zahid Mahmood. Dr. Zahid is a principal scientific officer at the Crop Science Institute, like NRC Islamabad, and a leading expert in agriculture research and technology. He has played a vital role in establishing the Pakistan first speed breeding facility and advancing the innovative technique like remote sensing, AI, machine learning in wheat breeding. With over 75 research publications and international training experiences, his contribution has significantly impacted the wheat production, including development of high-yielding, climate-resilient varieties like NARC Super. So it's all about our session, and so we can start our session. Thank you. थैंक यू सो मच. जैसे कि ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है तो टुडे वी विल टॉक ऑन स्पीड ब्रीडिंग एंड हाई थ्रूपुट phenotyping as a powerful tool to fast track wheat varietal development process. So first of all, does wheat matters? Is wheat so important that we are working on it? So let's have a look on importance of wheat. Wheat is a very important crop. It's a food security crop, and we are getting about 60 to 70% daily calories from wheat products. Area is 9.6 million hectare, and the crop production is 31.4 million ton this year, and the yield is about 3.3 ton per hectare. It's a country average, and uh, you can say that yield increased over last 5 years. If we are talking about the development, so it's a 12%. So until now, the Pakistan have released about 200, more than 250 varieties. So there is a big yield gap between potential progressive farmer and provincial average yield. So if we talk about the potential, it's like 9 tons per hectare, and the progressive farmer is taking like 6 tons per hectare, but our provincial yield is about 3.5 tons. So there is a big gap in between the potential progressive farmer yield and overall the average of the country and the provinces. So national wheat varietal development objectives, here are some national objectives like high yielding, pathogen resistance, especially the wheat rust. Then the climate resilience is our major goal. Then there are, when we talk about the climate resilience, there is the drought tolerance, heat, terminal heat tolerance, frost tolerance, and the salinity tolerance. So then again, we need a short duration, zone specific, and we need also variety with the low input requiring genotypes. And nowadays we are working on biofortification, and NARC have a edge that we have released Pakistan's and even South Asia's first zinc biofortified variety, which is Zincol 16. So post Green Revolution percent increase, if we are looking historically since 1971 and to 2023,
The area under wheat production is increased 55%, and the production increased 300%, and the yield increased 158%. So from here you can have a look on the you can have a you have a good the looks that that the area is increased 55%, but we are producing we have production increased 300% and yield increased 150%. So this wheat is very important for the crop. If there is a 1% decrease or increase in the production, it means there are about 16 more than 16 billion rupees that counts from Pakistan's economy. Means if 1% is decrease or 1% is increase, so it means this is more money than 16 billion rupees. So it's a very important crop regarding our the consumption, regarding our the economy. And again, as you know that this is the staple food, so we need more production and more the healthy crops. So Pakistan lies about on sixth or seventh in the world. So our already mentioned that we are producing 31.4 million tons per year. So, what are the major challenges in wheat production? So, major challenges are biotech stresses, which are biotech mainly diseases, especially rust diseases. You can see on the right side, on the top side, these are the three rusts: stripe rust, leaf rust, and the stem rust. Then we have the other weed insects and pest problems. Then we have abiotic stresses like heat, terminal heat stress, temperature fluctuations, drought, and severe drought and erratic rains. For example, nowadays in Islamabad, you can see since last 4 months we don't have much rain. Even just we have a light showers. But on the other hand, in the country we are having good rains in this season. But especially if we are talking about the Islamabad and the Pothar region, so we have very less rainfall. So again, it's a climate change, and you can say this a drought and erratic rains. So then soil salinity is a problem. So again, we have a crop management issues like late planting in the rice belt area, and the use of non-certified seed, inadequate and imbalanced use of inputs, and the poor management practices. And again, biofortification is also issue when we are using, we in around the globe we are the highest uh, on the side of the consumption. Like a one man maybe can use 124 kg per annum. So it's when we are using more wheat, and if there is a less nutritious wheat, so we are facing like zinc iron problem. So biofortification is again an issue, and uh, we should discuss this issue, and we should develop a new varieties which having biofortification of iron, zinc, and other nutrients. So, wheat program at Crop Sciences Institute, National Agriculture Research Center, NARC, Islamabad. So, what are our main goals? So, our main goal is development of climate resilient, high yielding, and biofortified wheat varieties. So for this purpose, you can see here, these are the NARC pictures. So for this purpose, for development, we are doing the conventional breeding as well as we are doing speed breeding. And we are also doing the phenotyping evaluation characterization. And same time, we are doing, the conventional method using conventional method, and we are also using the drones for multispectral imagery, and ultimately we are using artificial intelligence, machine learning tools for phenotyping and evaluation of different lines of wheat which are going to present for varietal registration. So, when we talk about the wheat breeding system and technology and adaptation in Pakistan, so conventionally we are doing a good job.
I already mentioned that Pakistan have developed more than 250 wheat varieties since 1947, but it takes like 12 to 15 years to develop and register a new variety. So the conventional breeding is a slow process because first when we do hybridization after F1 in F2 generation, it starts a segregation, and we cannot select any plant until it is going to homozygous. So we need approximately 8 years to fix and homozygous lines. So again, further that we are doing evaluations and then national trials and other registration process. So it takes like 15 years. So in 60s there was a new technique that called the shuttle breeding, and in shuttle breeding, actually we were doing we are taking two generations per year. We are, for example, in Pakistan, since 60s we were planting wheat in November and harvesting in April, May, in the hot areas like from Islamabad to down to the, you can say, the to the Sindh areas. And then we are planting even now we are planting wheat in June in Kagan area, but again it's it's a rainy season, so growing wheat in rainy season is too tough. But in this way, we are taking two generations only per year. The recent adaptation of advances in wheat breeding, that's the speed breeding. We have established Pakistan's first wheat speed breeding facility at NARC. On the right side, downside, you can see the picture. So it's not only the Pakistan's first wheat speed breeding facility, but it's also a purpose-built first wheat speed breeding facility of South Asia. So, what is speed breeding? It's a NASA-inspired set of techniques that involves the manipulation of environmental conditions under aiming to accelerate flowering and seed set to advance the next breeding generation as quickly as possible. So it means that these are the set of environmental conditions like temperature, photoperiod, humidity, and we want to advance our generation. For example, in normal conditions, we can just, for example, in Islamabad, in Faisalabad, and Karachi, we can just have a one generation in the field. For example, the sowing time is November, harvesting time is April, May. So again, that's the hot season, so we cannot plant again wheat in the field. So we can just have one, the generations. But in speed breeding facility, we can have up to six generations of wheats in a year. And further, I will talk on these things. So first of all, it's this technique is NASA-inspired technology. 1980s, NASA funded research aiming to grow wheat in space. So they took wheat plants, and as you can see on the left side, there is a chamber. This chamber is International Space Station's chamber. So NASA scientists were growing wheat under the in the space station in the space. So after and that experiment was under constant light and controlled temperature to accelerate plant development. Actually, they were just want to grow, and they want to know how they can grow wheat plants in the space. But there was you can say a luck. They were not switching off the light, and when there was a light, the plant was getting photons, and they were doing photosynthesis, and plant growth was rapid. And you can say that the generation time was less than 6 months. So from this idea, people started working on wheat speed breeding.
Now I will talk on that. So this is about the evolution of the speed breeding. So in you can say in 1980s, NASA started this project. Then in 2000, first time the University of Queensland, Australia, they started working on how they can manage these prolonged photo period and the temperature control and the humidity control in the glass house. So they work about you can say 12 to 13 years, and then in 2018, the first time they established the protocols of speed breeding technology. In the nature protocol on the left side, you can see the picture. So first time they established speed breeding protocols. Later on, I will discuss what are the protocols and how we can uh, manage in a speed breeding glasshouse. And on the very, you can see here on the right side, uh, as I earlier mentioned that it was the technology was published in 2018. At that time, I was working there at the University of Queensland, Australia. So I learned there, and I came back to Pakistan, and I in 2021 I established Pakistan's first speed breeding facility at NARC. So why speed breeding? First of all, we should know that why we are doing speed breeding, because generation advancement is a major bottleneck for plant breeding. It takes a lot of time, and when you see here in the breeder's equation, the time is here. The time is very important. So if we are working and we are developing new variety, and it takes more than 15 years, so it's not you can say it's a good technique. So we need to fast track our techniques. So where speed breeding fits, what we can earn from speed breeding, first of all, is off season generation turnover. You don't need any season in the field, just in the glass house off season, and around the year you can advance the generations. Then rapid hybridization. In just a time of 2 months, you can have a seed of hybridization. And then bringing the breeding program indoor, you can bring your breeding program indoor, and around the year you can do breeding. Then rapid screening of traits, so you can easily screen the different traits of interest very rapidly. Instead of once in the year, you can do 6 times in a year. So again, you can combine the speed breeding with the genomic selection. Yeah, you can, if you want to screen your populations and you want to reduce the size and you want to accommodate more number of plants, you can accommodate. You can do the you can integrate the genomic selection, and you can have a perfect results. So, speed breeding has the potential to reduce the time required for cultivar development. So, in a short story, is speed breeding is a new technique by which we can have a rapid development of new varieties. So here I have the traditional versus a speed breeding pipeline. So there are two breeding pipelines. Once the upper one is a conventional breeding pipeline. In breeding conventional breeding pipeline, the first you can see crossing, and in breeding time it's 8 years, and if you reduce by any means, it will be like 4 years. But through speed breeding, you can reduce it up to 1 year. So this is the main difference between normal conventional breeding pipeline and the new speed breeding pipeline. So what we do in this, the in whole system, I called it seed to seed system. We sow the seed and we harvest the seed of next generation. So it's called like seed to seed system, and it takes 6 to 8 weeks to seed speed breeding system. Means in just in 6 to 8 months, we can have
seed of new generation. We are sowing, we are planting the seed, and we are harvesting the seed just in 2 months. So by this mean, we can easily have 5 to 6 wheat generations per year. So in this system, here, you can see the potting mixture. We use peat moss that helps rapid growth in of plant. Then we, for wheat, we maintain temperature 17 to 22 degrees centigrade. Then we maintain humidity 50 to 70%. And then the main thing is that that's the photo period. So this photo period, we maintain 22 hours of photo period for wheat crop. And this photo period, you have a, the very specific spectrum of light. I will talk later on, but here I will tell you that it needs a specific ppfds. Ppfd mean photosynthetically active photon flux density. That's lies from 450 to 500 or 600 micromole per meter square per second. That's a specific spectrum of light that plant need for rapid growth. So then again, we have a scaling of the light and the plants. So we have to scale the lights, that at which position the light is putting our the plants required, the photo the spectrum, light spectrum. And then we have some early harvesting stage. So at some stage, when this going to yellow and seed is little hard, so we cut it 15 days earlier, and then we dry it at 35 degrees centigrade in hot air drying ovens. And then the seed is ready for next generation planting. So this whole seed to seed system takes 6 to 8 weeks. So in this way, easily we can have 5 to 6 generations of wheat in a speed breeding glass house. So, what is important? What are the important parameters? The light quality is a very important. It's a very important because first there are two things. In first thing, we are increasing the photoperiod time. For example, on the earth, earth, we have just 10 to 12 hour of photoperiod when sunlight is available. But in the speed breeding glass house, we are increasing the photoperiod time from, for example, 10 to 12 hours to 22 hours. So we are giving 22 hours of continuous light. And then in this light, we are providing, sorry, we are providing a specific spectrum that's called the PAR, photosynthetically active radiation, that starts from 400 400 nanometer to 735 nanometer. So in this region, again, plants are using more blue spectrum, more red spectrum, and these LED grow lights you are seeing here on the left side, these are very the fine equipment for speed breeding. So these lights are fully controllable and programmable. So when we say programmable, so in these lights, each spectrum, for example, blue, green, yellow, red, and the far red, we are control them, we can program them. For example, if we say at the night time, the light, this for 2 hours, this blue spectrum we need to close, we can close it. And after 2 hours it will be again it is on. Means you can program according to your experiments and according to your objectives of your experiment. So different light spectrum have a different role. For example, blue spectrum is need for vegetative growth. So red light, it induce the flower induction and helps in photosynthesis. So again, I was talking about scaling up of speed breeding facility. So when we provide the light, a plant needs a specific amount of light and quality of light. So when
we are putting any grow lights, especially LED grow lights. So they every light is have us its own capacity, you know. So we need to adjust the light height, or you can say the distance from the plant canopy. So we have a PPFT meter, and we check at which the height the light is giving proper PPFTs, proper light spectrum. So we adjust our lights at that height. So again, in speed breeding, we have 22 hours of photo period, and in normal glasshouse, we have just 12 hours of photo period. So this is the main difference between normal and the speed breeding glasshouse and its scaling. So harvesting. So when the plant is the spike of wheat is going to yellow and the seed is little hard, so we cut these spikes and we uh, dry it at 35 degrees centigrade for 3 days, and it will be dried. And because we are advancing the the filial generations that are the segregating generations, so there may be some germination problems or imbalanced germination. So for germination synchronization, we are doing water soaking, and then we give temperature shock at 5 degrees centigrade. From 35 degrees centigrade, we are going to soaking in the water overnight, and then we are putting for 2 nights at 5 degrees centigrade, and then seeds are sprouting and they are ready for planting. So in this whole system, in this whole way, actually we are creating plant factories. Why we are saying plant factories? You can see on the right side, on the down side, there are a lot of plants in a small room. It means that in a small place you can grow a number of the plants, and you can have a healthy plants. Here in this picture, you can see we have harvested 21 spikes from a single plant, and we have harvested about 800 wheat seeds from a single plant. So by this, the experiments, you you can understand that how much plant health is, the is good in this facility, and you can produce as you want. So again, as we want to accommodate more number of plants, for example, in a population, if there are 200 the individuals, and you want to accommodate more plants, because in generation advancement you just need to the have a one seed from one plant for next generation. So we can grow 300 plants per meter square, we can grow 640, and even we can grow 1000 plants of wheat and barley in a 1 meter square, and we can have abundant seed to go to the next generation. So it's like a factories, and you can produce a lot of plants in a short time. Speed breeding at NARC. So we are advancing generation in just in 56 to 64 days, harvesting 5 to 6 generations. Maximum harvested spikes, we have harvested 31 spikes from one F1 plant, and we harvested maximum 880 seeds from one single plant. So this shows that the good health and the good conditions for plant health. So we perform the rapid screening analysis, for example, for heat tolerance, and for the drought tolerance, and for root phenotyping. And then we have, up till now, we have advanced this 265 populations. We developed here, we advanced through speed breeding, and 170 population of other institute. It means that we are also collaborating with the other institutes, like Ayub Agriculture Research, Faisalabad, WRI Faisalabad, CCRI Pir Sabak Nौशहरा, and the other KP government, with the we are collaborating with the universities. So this is not a technique we are talking about. Actually, we are doing,
And on the right side, downside, you can see here, these are the this is the last year picture, and we had like more than 1500 F6 and F7 wheat line, which were purely developed through speed breeding in just in 1 year. And this was the second year of these speed breeding, advanced lines in the field evaluation. So speed breeding can save 6 to 7 years very easily. So this is again another picture of wheat population developed through speed breeding under the field trials. So this is not a myth. This is a reality, and we have advanced 6 generations in the glass house, and at the seventh generation, we planted in the field, and now you can see these lines are at seventh F8, and we are evaluating them for different other traits like the disease tolerance, heat tolerance, and you can see the other parameter like yield and yield contributing traits. So this is again another aerial view of our wheat population developed through speed breeding under the field trials. So these are the pictures of Pakistan's first speed breeding facility to fast track varietal development. This facility was developed under the Wheat Productivity Enhancement Project funded by the PSDP. So you know the PSDP Public Sector Development Program. So we had a project, still we have, and we developed Pakistan's first speed breeding facility. So this was not a Pakistan's first speed breeding facility, and even South Asia's. This was, you can say, it was a third or fourth purpose-built wheat speed breeding facility in the world. So this was a very pioneer step. So University of Queensland, Dr. Lee Hickey, who is a founder of this technology, he published our speed breeding success story on their university's web page. So you can see on the right side. This is our success story published by the University of Queensland, Australia. So we are not working alone. We have national and international partners, collaborators. We are working with the WRI Faisalabad, CCRI, KPK, ARS Fateh Jang, Wheat Coordination Program, Nigab, Qaid University, and Nibji Faisalabad, ARI Khan, Haripur University, University of Queensland, Australia, CIMET International, Chinese Academy of Agriculture Sciences, Asian Development Bank, and ACIAR Australia, Zetsu University Kazakhstan. So here you can see our friend. He's a professor in the University of Zetsu University in Kazakhstan. He came to Pakistan last year. He learned this technique here, and now jointly we are establishing a new speed breeding facility in Kazakhstan. Uh, in the Zetsu University. So we are not simply we have established this facility and we are working on it, but we are helping our national and international partners and collaborators. So now I will. Previously, I talked about the speed breeding, about the breeding, and uh, how we can develop a new wheat lines. And when we have a new wheat lines, so you know there are a lot of new lines, and this comes in thousand when you're working in a breeding program. So these lines are not in hundreds; these are lines are in thousands, and then you have to evaluate the thousands of lines, and you need to select a few of them, and then you have to put in the national trials. So for this purpose, we call it phenotyping to record different phenotypes of wheat or any crop line. So it's called phenotyping, and here we have presented a new idea since 2020, that if we combine speed breeding and other conventional phenotyping with the high throughput phenotyping, so we can
have a more robust, more accurate, and more easy approach for phenotyping. For example, in phenotyping, the plant height, the NDVI, senescence rate, early ground cover. So a lot of parameter, and even the yield assessment finally. So if you have, for example, we have established a new, the genotypes, and we have planted in the field, and in one, you can say 2.4, in one 5 acre plot, in one plot, that's a 5 acre plot. So we have about 1800 wheat lines in this, the plot. So for 800, 1800 plots, we need to record the plant height, number of tillers, yield assessment, senescence rate, NDVI. So lot of traits. So by this high throughput mean that in a short time you can record a lot of data, and this high throughput phenotyping platform, actually we are using drone, and we are using multispectral sensors. When talking, I will talk on these. So why we are doing this phenotyping by using by drones? Because the phenotyping of large number of population in the field is a bottleneck. If I want to record, for example, this is canopy temperature picture. So if I need to record the canopy temperature of each plot under in the field, 1800 plots, so at least I need to about 3 to 4 thousand readings just for a single trade. But by using these sensors, I can just have a run this a drone for just for 5 to 10 minutes, and it can record many the uh, trades in just in few minutes for thousands of entries of under the field evaluation. So example of the V trials at NARC, you can see this is a drone stitched imagery, and drone take a lot of thousands of pictures which have the multispectral imagery, and that have the uh, their GPS signatures, and then we stitch it by a software, and we have this orthomosaic single image. This was not a single image. These are thousands of pictures, and then we stitched it with the software, and now we have a one picture. And from this picture we can draw a lot of information, different data sets for different traits. So what we can do, what sort of the platforms for high throughput phenotyping? For example, these are different, the sensors are cameras. This is RGB camera, simple camera we are using, then hyperspectral and multispectral sensors, then thermal sensors, then you can see the lidars, and then you can see the canopy temperature thermal sensor. So these can assist early selection in field through NDVI, canopy temperature, pigment senescence rate, stay green trait, plant height, spike numbers, ground cover, and yield prediction. So actually, we can predict yield of thousands of plots just by doing a few missions of the drones with the multispectral sensors. So this can help us very easily. So here UAV based aerial phenotyping platform, what we have at NARC, you can see at NARC we have a different the drones and different sensors at NARC which we are using for uh, phenotyping. So these are the different sensors. For example, this is MicaSense, uh, and this one is a MicaSense Eltham PT. This is Parrot Sky, and this is again other company. This is a DJI drone which have multispectral sensors. So first of all, you need to learn that how these sensors are helping us when these sensors are taking picture. These all pictures are on the basis of reflection, the plant which is getting
the light from sunlight. And if the plant is healthy, it's absorbing more, red, blue, and green or lights, and reflecting less. But if the plant is under stress or not healthy, it will absorb less, the rays, and it will reflect more. So when we having image of reflection and absorption base, so we can easily calculate by different softwares that how much plant is healthy. So again, we can draw, the early ground cover, or you can say we can easily detect uh, the number of plants. For example, if we have a sunflower plant, that's a bigger plant, and we can easily detect we can easily have the inventory of seedling inventory in the field. So again, we can have a lot of other data: number of heads, number of spikes, number of fruits on different things. So again, this is the extracting data from different imageries. So what we have done until now in at NARC, we have a phenotype about 2,500 wheat plots, 1,100 potato plots. When I'm saying that plot, it means different lines or varieties. So 1,100 potato plots, 1,300 pulses genotypes, 500 rice genotypes, and 1,200 oilseed crop genotypes. So you can see here different plots, and these are the orthomosaic image which produced by the multispectral imagery, stitching of the multispectral imagery. So you can see here these plots have phenotyped by drones. If we were doing ourselves by hand, it will take a lot of time. So again, we can use machine learning, deep learning, artificial intelligence, and the Internet of Things. So we have a different experiments at NARC. We have published a lot of papers on detecting and monitoring wheat rust disease by using the machine learning and artificial intelligence approach. And mainly in these approaches, we are using RGB images. Again, we have a project to count the number of spikes per unit area in a plot. Means how much the number of spikes, there will be more. If the more number of spikes, there will be more grain yield. So this is a very important trait. And if we can easily identify the number of spikes in a single or in a unit area, so it's very easy. Again, then we have Internet of Things, different IoT sensors, and we planted in the field. And by these sensors, we can easily detect the fluctuation of environment and the impact of those environment fluctuations on the plant growth. So thank you very much to listening me. This is NARC's picture. And again, in just in 2 minutes, I will tell you that speed breeding is a new technology that aims to shorten the breeding cycle and the generation turnover. We can increase the generation turnover, and by this way we can develop a new variety in short time. And by doing the high throughput phenotyping using UAV based multispectral sensors, we can have a very accurate, very easy, and high throughput phenotyping of different crops. And this is a very good method. And now I will ask from the management, the session must be open for the for question and answer. Thank you so much, sir, for such an amazing knowledge and for such an amazing session. Thank you so much again. And now, please Welcome. uh, drop your questions in comment box so you can ask your questions to our honorable speaker.
Kindly leave your comments and please leave your question so you can ask your question. You can ask your question here um, by your microphone. सर सिर्फ कमेंट बॉक्स पे अगर ये कर देना तो हम खुद ही आपको बता देंगे कौन से क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक, तो इस तरह ना ये भी ठीक कोई है। मिसहैप नहीं होगा। जैसे भी आपको इजी लगता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। हफ्सा, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? जी सर, इस टाइम 104 बच्चे ना लाइव अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे ना। ओके। ये भी क्वेश्चन सर आ रहे हैं बच्चों के, तो मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ क्वेश्चन ना बच्चों को। ओके। ओके जी, ये क्वेश्चन आया है कि क्या स्पीड ब्रीडिंग जो है, नुमान खालिद ने पूछा है कि क्या स्पीड ब्रीडिंग फिजिबल है इन ऑल क्रॉप्स। तो इसका क्वेश्चन ये है, आंसर ये है कि क्रॉप्स दो तरह की हैं जब हम फोटो पीरियड वाइज देखते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो मैनिपुलेशन है वो फोटो पीरियड की है। तो जब हम फोटो पीरियड की बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो पीरियड। एक तो है लॉन्ग डे क्रॉप्स, ठीक है, जैसे वीट है, जो जो हमारे रबी में होती हैं, वीट हो गई, चिकपी हो गई, ब्रासिका हो गई। तो ये टेम्परेचर के लिए इतनी सेंसिटिव नहीं है, टेम्परेचर सॉरी फोटो पीरियड के लिए इतनी सेंसिटिव नहीं है। तो अगर हम फोटो पीरियड 10 घंटे से 12 घंटे से बढ़ा के 22 घंटे करते हैं तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ता। बट जब हम खरीफ की बात करते हैं तो जो कि शॉर्ट डे क्रॉप्स हैं, तो फॉर एग्जांपल मूंग बीन होगी, माश बीन होगी, राइस हो गई, तो उसके लिए आपको जो स्पीड ब्रीडिंग की जो उसके अंदर आपने इनको जो फोटो पीरियड देना है वो फिर 22 घंटे का नहीं होगा। तो उसको चेंज करना पड़ता है, उसका स्पेक्ट्रम और उसकी फोटो पीरियड लेंथ, तो देन उसके लिए भी फीजिबल हो जाती है। बट दे आर सेंसिटिव, उनमें डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं फ्लावरिंग के और फोटो सेंसिटिविटी के। बट नॉर्मली जो लॉन्ग डे क्रॉप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वीट, राइस, सॉरी वीट, चिकपी, ब्रासिका, तो इन क्रॉप्स के लिए तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गए हैं। बट मीन ऑन द अदर साइड जो है, पल्सेस पे भी काम हो रहा है और राइस की ऑलरेडी जो है इरी पब्लिश कर चुका है इसकी स्पीड ब्रीडिंग, तो उस पे भी काम हो रहा है। तो बाकी ये डिपेंड करता है कि लोग अब आइंदा कितनी कितनी किस किस क्रॉप पे काम करते हैं और उसको वो लेके आते हैं इसमें। Is speed breeding used for commercial production or only for experimental process? सो जब हम बात करते हैं कि स्पीड ब्रीडिंग ये कमर्शियल भी हो सकती है या प्रोडक्शन के लिए या ये एक्सपेरिमेंटल है, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि जैसे मैंने अपनी सारी स्लाइड्स में दिखाया है कि इसमें हम जनरेशन एडवांसमेंट करते हैं। तो जनरेशन एडवांस करके हम फील्ड में जा चुके हैं, हमारे पास इस टाइम 3rd ईयर की क्रॉप लगी है, तो मीन्स के ये कमर्शियल हो गया। बट इसको कमर्शियल को किसी और तरह भी आप ले सकते हैं कि जैसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो रैपिड ग्रोथ होती है, एक्चुअली इसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड ग्रोथ कंडीशंस, कि हम एक त्रेज़रीन जो है ना नशो-व-नमा का सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये 2 तरह का है, एक ब्रीडिंग के लिए है, तो ब्रीडिंग में हम प्लांट के साइज़ और उसकी हेल्थ पे उतना फ़ोकस नहीं करते, क्योंकि हम इसमें यूज़ करते हैं एसएसडी मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। इसमें हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि हम जब F1 बन गया तो F1 प्लांट पे जितने वीट के सीड लगेंगे, 200 लगे, 300, तो F2 में वो एक हमारी पॉपुलेशन हो गई बाइपेरेंटल। तो वो 200 सीड को हम सिंगल सीड लगाते हैं, मीन्स के सिंगल सिंगल सीड को लगाते हैं 1 से लेके 200। तो अब ये इन्हीं 200 प्लांट्स को हमने F3 करना है, F3 से F4 करना है, F4 से F5। तो हर 200 का जो एक इंडिविजुअल प्लांट है उससे हमें एक सिंगल सीड चाहिए, F2 से F3, F3 से F4 एंड सो ऑन। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि इसमें हम हेल्थ इतनी मैटर नहीं करेगी, उसके स्पाइक स्मॉल भी है तो वी जस्ट नीड अ सिंगल सीड।
तो अगर उसमें हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाए तो कोई मसला नहीं। बट जब आप अगर आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि बाय यूजिंग दीज रैपिड एक्सेलरेटेड ग्रोथ कंडीशंस, तो देन आपको स्पेक्ट्रम चेंज करना पड़ता है जिसके अंदर पहले प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ प्रॉपर हो जाए, देन उसके अंदर फ्लावरिंग और वो चीज़ आए, तो उस पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकती है। कैन वी ज्वाइन दिस प्रोग्राम एट NARC एंड हाउ? जी, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे ज्वाइन करने के डिफरेंट वेज हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आप यहाँ रिसर्च कर सकते हो, एमफिल की, पीएचडी की, बीएस की इंटर्नशिप कर सकते हैं, और इसके अलावा जब जॉब्स आती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड आप एज ए वॉलंटियर रिसर्चर भी आ सकते हो। तो मेरा नंबर आप इनसे ले सकते हैं, ये आपको मेरा नंबर शेयर कर देंगे, तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। कैन यू elaborate the use of software for management of spectrum? जी, ये जो लाइट स्पेक्ट्रम, ये बेसिकली मैंने आपको बताया हेलियो स्पेक्ट्रा एलईडी ग्रो लाइट्स हैं। तो हीलियो स्पेक्ट्रा अपना हीलियो कोर के नाम से एक सॉफ्टवेयर बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं, वाईफाई से ये कनेक्टेड होती हैं। तो हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसका जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ब्लू, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और फार रेड, ये स्पेक्ट्रम्स हैं। तो इनको हमने किसी को भी कम ज़्यादा करना है, उनको प्रोग्राम करना है, टाइमिंग देनी है, तो हम इजीली कर सकते हैं। Can speed breeding be combined with other breeding technologies such as gene editing and marker assisted breed? जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जीनोमिक सिलेक्शन हम कर सकते हैं और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल आप F3 में आप चाहते हो कि हमारे पास जो आपने फॉर एग्जांपल 2 पेरेंट्स क्रॉस किए हैं, एक डिज़ीज़ ससेप्टेबल है और एक डिज़ीज़ रेज़िस्टेंट है। तो अब आपके पास जब आप एसएसडी कर रहे हो, सिंगल सीड डिसीजन मेथड से आप जनरेशन एडवांस कर रहे हो, तो आपके पास तो सारे प्लांट्स वो नहीं होंगे रेजिस्टेंट। तो आप अगर चाहते हो कि आप इसको रेजिस्टेंट आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप मार्कर लगाएं उस पे, और मार्कर लगाने के बाद जो आपके पास रेजिस्टेंस आप उनको लेके जाएं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप डेफिनेटली आप इसमें ये टूल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कैन वी यूज़ एलईडी लाइट फॉर प्लांट्स? जी, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जब हम एलईडी लाइट्स यूज़ करते हैं, तो हम कौन-सी लाइट यूज़ करते हैं। बेसिकली जो सनलाइट है, ये फुल स्पेक्ट्रम है। तो सनलाइट फुल स्पेक्ट्रम जब प्लांट उसको एक्सपोज़ होता है, तो प्लांट उसके अंदर पार का जो रीजन है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कि 400 से लेके 735 नैनोमीटर तक की है, उसी को यूज़ करता है। लेकिन यहाँ पे एक और थोड़ा-सा ट्विस्ट है कि ये 400 से लेके 735 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑब्ज़र्व करता है। उसमें कलर आते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और फार रेड। लेकिन उनमें भी ब्लू और जो रेड कलर है उसको ज़्यादा ऑब्ज़र्व और यूज़ करता है प्लांट। जिस वजह से आपको ये जो स्पीड ब्रीडिंग आप कभी भी देखते हो, तो इसकी लाइट का कलर आपको पिंक या पर्पल नज़र आता है। उसकी मेन रीज़न क्या होती है कि इसके अंदर हमने रेड और ब्लू स्पेक्ट्रम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से इसका कलर पिंकिश या पर्पलिश नज़र आता है। तो येस, आप प्लांट्स के लिए ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। What is the moisture level of oven dried wheat seed for next generation and how it will affect the germination and growth? तो ये नॉर्मली तो हम इसमें मेजर नहीं करते हैं। जब हम सीड को हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो मे बी उसमें तो 40% से भी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। बट हम उसको 35 पे हॉट एयर पे करते हैं। 35 इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता। तो इस नॉर्मली मेरे ख्याल में 15 से 10 से 15% मॉइस्चर लेवल हो। As speed breeding is accelerated method for growth of crop,
manipulating environment, so this have drawbacks on environment. अच्छा, ये आपने कहा है कि इन्वायरमेंट पे कोई कंवल का क्वेश्चन है कि ये जो है ना स्पीड ब्रीडिंग एक्सेलरेटेड मेथड है, तो ये हम जनरेशन एडवांस कर रहे हैं, और ये इम्पैक्ट इसका इन्वायरमेंट पे किस तरह है, ड्रॉबैक, ये मुझे समझ नहीं आ सकी। इन्वायरमेंट को तो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं कि उसको टेम्परेचर एक स्पेसिफिक दे रहे हैं, तो हम असल में ये चाह रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो रैपिड हो जाए। प्लांट क्या कर रहे हैं, वीट प्लांट, के वो एक जनरेशन F2 से F3 में जाना तो हमें 1 साल लगता है, फील्ड में एक ही दफ़ा वीट हो सकती है या मैक्सिमम 2 दफ़ा हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसको टेम्परेचर आइडियल दे रहे हैं, फोटो पीरियड दे रहे हैं और ह्यूमिडिटी दे रहे हैं, वो 2 माह के अंदर हो रहा है। और चूंकि हमारे पास ये कंट्रोल फैसिलिटी है तो हम 1 साल में 6 जनरेशन्स ले रहे हैं। अब इसकी ग्रोथ पे तो थोड़ा सा असर होता है, तो वो मैंने आपको पहले बताया कि हम एसएसडी मेथड यूज करते हैं, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। उसमें हमें एक जनरेशन से लेके अगली जनरेशन में जस्ट सिंगल सीड चाहिए होता है। तो अगर हम प्लांट को हेल्दी इन्वायरमेंट, वहां पे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, तो वो भी प्लांट हेल्दी भी ग्रो हो सकता है। बट हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, हम ये चाह रहे होते हैं कि हमें ज़्यादा से जल्दी हम अगली जनरेशन में चले जाएं। तो एनवायरनमेंट पे इसका कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं होता, ग्रोथ पे होता है प्लांट की, वो भी हम करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी वैरायटी डेवलप थ्रू स्पीड ब्रीडिंग इन wheat or other crop? If yes, please tell us name of the varieties. तो नियाज हुसैन, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि वैरायटी का जो डेवलपमेंट प्रोसेस टाइम है ये 12 से 15 साल है। तो हमने ये 22 में स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम ना। तो अभी हम वो जो जिनको 8 साल लगने थे, वो हम उनको जस्ट 1 ईयर एंड 2 मंथ्स के अंदर हमने वो 6 जनरेशन लेके फील्ड में जा चुके हैं। अब हम 6 साल तो उसके कम कर चुके हैं, तो अभी वो यील्ड के दूसरे प्रोसेस पे 2 साल और लगेंगे, तो थर्ड ईयर में आज से 3 साल के बाद जो है ना, वो वराइटल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चली जाएगी। तो अभी तक बाहर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने वैराइटीज डेवलप की हैं। हमने चूंकि अभी 22-23 में काम स्टार्ट किया था, अभी थर्ड ईयर है, तो इसलिए हमें अभी 5-1 साल लगेंगे। तो ये वाली जो लाइंस हैं वो फील्ड में हैं, टेस्ट हो रही हैं, और जो ही वो अप्रूव होंगी तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा जी, एज इट्स मॉडिफाइड वर्जन विद एक्सेलरेशन ग्रोथ, डज ग्रेन लॉस देयर न्यूट्रिशन वैल्यूज। अच्छा जी, ये उमर पूछ रहे हैं कि क्या इससे कोई न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी होती है। तो उमर, सबसे पहले समझने की बात ये है कि हम ये प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, ये हम, इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि ये स्पीड ब्रीडिंग है। तो हम इसमें बेसिकली जनरेशन एडवांस कर रहे हैं कि आप क्रॉस करते हो A into B, तो आपके पास F0 सीड आता है, तो उसको आप लगाते हो तो F1 प्लांट बनता है। तो F1 से F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F8 पे प्लांट जाके होमोजाइगस होते हैं। तो हमारा पर्पस उसकी ग्रेन क्वालिटी को कुछ डिस्टर्ब करना नहीं है, हम उसको जस्ट ये जो उसकी जनरेशन है ना, F1 से लेके F8 तक, इसको 8 साल लगेंगे, उसको हम कम करते हैं कि वो 1 साल और कुछ महीने में हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी ग्रेन क्वालिटी किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं होती, वो उसकी जेनेटिक्स वही रहती है। हम जस्ट उसको जो एक कह सकते हो ना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं, एक्सेलरेटेड ग्रोथ कंडीशंस। तो वो 6 महीने की बजाय 2 महीने में हो जाता है। तो चूंकि ग्लास हाउस है तो वो पूरा साल चलता है, तो वो 6 जनरेशन आ जाती है जी। आर दीज चैलेंजेस एसोसिएटेड विद स्पीड ब्रीडिंग? आपने पूछा है शाहजेब अली ने कि आर दीज चैलेंजेस एसोसिएटेड विद स्पीड ब्रीडिंग? कौन से चैलेंजेस? ये सारे, कोई भी चैलेंज हो, अगर मैं बात कर रहा हूँ हीट, ड्राउट, डिजीज की, तो वो सारे के सारे चैलेंज ब्रीडिंग से ही वो रेलिवेंट हो जाते हैं। इस तरह के, फॉर एग्जांपल, हमने वो वैरायटीज बनानी है जो हाई यील्डिंग हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, ड्राउट टॉलरेंट हो, सैलिनिटी टॉलरेंट हो, हीट टॉलरेंट हो। तो हम वो अगर वैरायटीज बना रहे हैं और हमें 15 साल लग रहे हैं, तो अगर हम स्पीड ब्रीडिंग से करेंगे तो वो हम कम से कम 7 साल
8-9 साल में 8 एक साल में बना लेंगे। तो हम 6 से 7 साल अपने ब्रीडिंग साइकिल से स्पीड ब्रीडिंग के थ्रू बचा रहे हैं। विच सॉइल इज बेटर फॉर स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप प्रोडक्शन? ये जी जय कुमार सन ऑफ आतम। जय कुमार, आपका क्वेश्चन है कि विच सॉइल इज बेस्ट फॉर स्पीड ब्रीडिंग। आई डोंट नो इफ यू आर अटेंडिंग फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान। सो जब आप when we are using speed breeding facilities, so the plant growth is rapid, so when shoots are growing rapidly, same time the roots, they are growing very rapidly. So when we use soil, it's a compact the mixture, so it don't allows much faster root development. So we use peat moss, or you can say the substrate, which include the peat moss, very few, the sand particles, and it's all about the peat moss. So peat moss is a very the soft and good porous, you can say the media, which allows a rapid root development, so we can easily have a good and healthy plant in the peat moss rather than in soil or any sand media or other things. Next. Okay. What is the most significant advantage of speed breeding? The most and the significant advantage of speed breeding is generation turnover. We can have more number of generations through speed breeding. We can have a 6 generations of wheat in a 1 year, and through the conventional system in the uh, in the field, you can just have one or two, the uh, generation of any crop. So generation number of generation turnover is the biggest advantage of speed breeding. So, sir, the crop which is breeded by speed breeding, I think, may be harmful in future. So, no, nothing to do with any harm, because we are not giving anything which is chemically or mechanically which is harmful. We are just giving any crop, we are giving just the good conditions which are needed for rapid growth, nothing more. So actually we are just the plants, they do photosynthesis just for 12 hours when the sunlight is available, and on the other hand we are just giving them a 22 hours of photo period, and plants are doing the photosynthesis and doing growth. So in this, we are just providing them the conditions which the plant needed, and we are not providing any chemical or any hazard material which will, harmful in future. So it's nothing to do with anything which is harmful. Next, sir, many varieties are available in market, but which can better grow in arid region, especially Tharparkar. So आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपने थरपारकर का पूछा कि कौन सी वैरायटी है, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो हर साल एक पम्फलेट इशू करती हैं, जिस पम्फलेट के अंदर बरानी इलाके के लिए और नहरी इलाके के लिए डिफरेंट वैरायटीज जो होती हैं वो तजवीज़ की जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ की बात बताऊँ, एनएआरसी इस्लामाबाद की, तो हम यहाँ पे जो इस एरिया के अंदर हम अपनी वैरायटीज़ रिकमेंड करते हैं। जो ये रीजन है, जैसे ये बरानी इलाका है, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान 13, बोरला, इसके अलावा वफाक 23, मरकज़, तो ये हम इनके लिए करते हैं। तो इसी तरह आप अपने जो लोकल एरिया है वहाँ के लिए कोई भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अकबर 19 एक बड़ी पॉपुलर वैरायटी है फैसलाबाद की, वो भी यूज़ होती है। इस तरह सिंध में काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। तो वो आप यहाँ वहाँ पे आपने ये देखना होता है
कि जो आपकी लेटेस्ट वैरायटीज होती हैं वो लगाएं। फॉर एग्जांपल TD1 एक बहुत पुरानी वैरायटी है जो ससेप्टेबल भी है, या इसी तरह आपकी अब्दुलस्तार वैरायटी है। तो अगर वो रस्ट ससेप्टेबल है तो उसको ना लगाएं, और वो वैरायटी लगाएं जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपके बरानी इलाके के लिए रिकमेंड करता है। आर देयर एनी ड्रॉबैक्स ऑफ स्पीड ब्रीडिंग? ड्रॉबैक तो इसका कोई भी नहीं है। इनफैक्ट जब आप कोई बंदा ये पूछता है कि जी इसकी ग्रोथ कैसी होगी प्लांट की विद इन दैट सिस्टम, तो जब वो ग्रो कर रहा होता है स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी के अंदर, तो चूंकि हम उसको रैपिडली ग्रोथ कर रहे होते हैं उसकी, और बेसिकली हम उसका बायोलॉजिकल सिस्टम हाईजैक करते हैं, उसको हम कंपेल करते हैं अर्ली फ्लावरिंग पे और अर्ली मेच्योरिटी पे। तो इन सेंस में उसकी हाइट कम रहती है, ठीक है। जब हाइट कम होगी तो उसका फ्रूट साइज, पेनिकल साइज या उसका स्पाइक साइज कम हो जाएगा। बट आपको पहले बता चुके हैं कि हमारा पर्पस उसकी जनरेशन एडवांसमेंट है, ना कि उसकी प्रोडक्शन है। तो हमें एक प्लांट से एक सीड चाहिए होता है, F1 से F2, F3 से F4, सो ऑन। तो हमें जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक प्लांट से एक सीड चाहिए होता है। तो इस तरह का उसके कोई ऊपर कोई कम इम्पैक्ट नहीं आता। क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी डेवलप वुड बी फास्टर रियली इन पाकिस्तान? हाँ जी, हाफिज नवीद साहब, आपने पूछा क्वेश्चन कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी डेवलपमेंट वुड बी फास्टर। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ जो लाइंस हैं वो प्रोड्यूस कर चुके हैं। वो अभी F8 पे हैं, वो हाई यील्ड और यील्ड कंट्रीब्यूटिंग ट्रेट। हमारा एक सेट प्रोसेस होता है कि जब हमारे पास फिक्स लाइंस होमोजाइगस आ जाती हैं, तो उसके बाद हम सबसे पहले प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल करते हैं, फिर हम एडवांस यील्ड ट्रायल करते हैं, फिर हम उसके स्टेशन ट्रायल करते हैं और रीजनल ट्रायल्स करते हैं। तो ये आपके 5-6 साल तो ये लग गए, और इसके बाद हम 2 साल न्यूवेट में, जिसे हम कहते हैं नेशनल यूनिफॉर्म यील्ड ट्रायल्स, तो वो अराउंड द कंट्री वो आपको तकरीबन मिनिमम मिनिमम 45 लोकेशन से तो डाटा लिया जाता है, बट वो बहुत लोकेशन पे लगते हैं। तो वहाँ से जब डाटा की आपको इन्फॉर्मेशन और एक रिपोर्ट आती है, तो उसकी बेस पे फिर आप एक वैरायटी को वैरायटी अप्रूवल कमेटी में लेके जाते हैं। तो रियली हम 6 साल बचा चुके हैं। अगर आप कोई एनीवन इंटरेस्टेड है, जैसे मैंने तस्वीरें भी दिखाई हैं, तो आप आके फील्ड में देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी जो 7-8 साल का काम था, 6 साल का काम था, वो 1 साल में करके तो हम उनको एडवांस कर चुके हैं। वो फील्ड में टेस्टिंग फेज में है इस टाइम। What are the future targets of speed breeding, and what are effect of speed breeding on wheat? अच्छा जी, स्पीड ब्रीडिंग का इफेक्ट व्हीट के ऊपर क्या हो सकता है कि हम उसको जनरेशन जो है उसकी वो रैपिडली डेवलप कर सकते हैं। एक साल में जो एक दफ़ा क्रॉप होती है वो 2 महीने में हो जाएगी, और एक साल में 6 जनरेशन आ जाएंगी। और व्हाट द फ्यूचर ऑफ टारगेट्स? तो हमारे टारगेट्स ये हैं कि कुछ अरसे से हम एक स्पेसिफिक जीन पूल था हमारे पास जो सिमट से हम यूज़ करते थे। तो रिसेंटली हमने जो लाइंस इसमें पहली डेवलप की हैं वो हमने चाइनीज़ जर्मप्लाज्म यूज़ की है, चाइनीज़ जीनोटाइप्स यूज़ किए हैं, उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाई है पाकिस्तानी वैराइटीज़ की। अब उनकी जो ये पॉपुलेशंस हैं, हम उनमें से सिलेक्शन कर रहे हैं। इसी तरह हमने कज़ाकिस्तान से इंपोर्ट की है सीड, उस पे हम काम कर रहे हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। सेम टाइम हमने क्या कहते हैं इसको, टर्की से हमने मटीरियल, और वर्ल्ड से भी हमारे पास आता है। बट कहने का मकसद ये है कि हम कुछ वो चीज़ें कर रहे हैं जो पहले से नहीं है, और मेन ऑब्जेक्टिव वही होते हैं, आपको पता है, हाई यील्डिंग, क्लाइमेट रेजिलिएंट और बायोफोर्टिफिकेशन। अच्छा जी, खालिद महमूद मरी पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी प्लानिंग टू एक्सपेंड दिस टेक्निक टू अदर प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री एज योर मेंशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन? तो खालिद भाई, इस तरह के मैंने जैसे आपको वो कोलैबोरेशंस में बताया, तो मैं तो ये कर सकता हूँ कि मुझे एक टेक्नीक आती है तो मैं किसी को उसकी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं उसको उनकी कंसल्टेंसी दे सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक नाम मेंशन किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक सिंध गवर्नमेंट को
एशियन डेवलपमेंट केपी गवर्नमेंट को इनको फंडिंग कर चुका है। और ये दोनों जो सूबे हैं ये अपने अपने मुल्कों में स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी वीट की बना रहे हैं, और हम वेल कनेक्टेड हैं, और मैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो है पंजाब गवर्नमेंट, उनको भी मैं उनके साथ भी लिंक्ड हूँ। फॉर एग्जांपल WRI है, वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में है, तो उनको भी करता हूँ। इसी तरह जो अगर वेजिटेबल से इवन है तो उनके साथ भी मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ। तो वो तो एक पेज पे मैंने कोलैबोरेशन बताई थी, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ। और जो इंस्टीट्यूट या प्रोविंसेस अगर मुझसे कुछ पूछते हैं तो स्पीड ब्रीडिंग के बारे में, तो वो हम उनको बता रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन स्पीड ब्रीडिंग, ओके। अक्सा का सवाल है जी, इफ अ क्रॉप वैरायटी इज ब्रॉड फ्रॉम एन आइडियल एनवायरनमेंट टू अ फील्ड, इज देयर एनी चेंजेस इन द परफॉर्मेंस? जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपने 5 to 6 जनरेशन जो वीट को है वो ग्लास में इंडोर ग्रो किया है, तो जब वो फील्ड में जाएगा तो उसको क्या होगा? तो अक्सर इसमें ये होता है कि अ, अगर हम उसको कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, कोई नेगेटिव माइनस में दे रहे हैं, या कोई 30+ दे रहे हैं और वो उसमें सरवाइव कर रही है, तो उसमें कुछ ऐसी चेंजेस आ जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वीट को आइडियल टेम्परेचर वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 17 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर है ये उसकी कोई जेनेटिक्स को तो चेंज नहीं करता। तो जब वो फील्ड में जाता है तो जो लोग भी हमें यहाँ पे विजिट करते हैं NARC में इस सीजन के अंदर, तो वहाँ पे स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी में भी क्रॉप्स चल रही होती हैं। सेम टाइम वही जो जो हमने यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो जनरेशन एडवांस की होती हैं, वो फील्ड में भी होती है, तो लोग उनको खुद भी देखते हैं। तो ऐसा इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, कोई जेनेटिकली कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं आती कि वो 6 जनरेशन इधर रहा है तो अगली जनरेशन वो जाके कहीं और जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज फ्रूट्स प्रोड्यूस्ड बाय स्पीड ब्रीडिंग वेरीज इन टेस्ट और साइज? अच्छा जी, ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं लव योर लाइफ। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि फ्रूट्स, तो फ्रूट्स पे तो हमारा काम नहीं है पहली बात। तो अगर हम वीट के सीड को ही एज ए फ्रूट कंसिडर करें, तो प्रोड्यूस बाय स्पीड ब्रीडिंग वेरीज इन टेस्ट और साइज, तो इसके अंदर कोई हम उसको मीन्स के अगेन जो पहली बात बताई है मैंने कि इसको कोई हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई केमिकल और टेम्परेचर रिजीम्स कि जिससे में उसमें कोई ऐसी चेंज आए। ये जस्ट वही आइडियल ग्रोथ टेम्परेचर होता है, जैसे फरवरी में अभी 10 से 12 और 20 25 तक जाता है दिन में। तो ये वो आइडियल कंडीशन है जिसमें प्लांट की ग्रोथ रैपिड होती है वीट की। फॉर एग्जांपल दिसंबर जनवरी में जब बहुत ठंड होती है तो आपको भी पता होगा कि उसकी प्लांट की ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं होती, स्लो होती है। तो ये हम उसको जस्ट उसकी ग्रोथ को रैपिड करने के लिए करते हैं, इससे कोई दूसरा काम नहीं होता। मुनीब सरवर पूछ रहे हैं, सर स्पीड ब्रीडिंग से कोई न्यू वैरायटी जब तैयार करते हैं उसमें पर जनरेशन का हिसाब सा खर्चा का कितना फर्क आता है नेचुरल की कंपैरिजन से? अच्छा जी, ये जो स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी है, लोग अमूमन ये गेस करते हैं कि ये बहुत महंगा सिस्टम है, क्योंकि इस पे करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये 22 में ये हमारी इस्टेब्लिश हो गई थी, तो उस वक्त हमारा आप कह लें कोई 60 मिलियन यानी कि 6-7 करोड़ रुपया लगा था। आज अगर बनाए तो 10 करोड़ लग जाएगा। तो मुनीब, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 7-8 करोड़ रुपया है इससे एक लैंड क्रूजर नहीं आती। ठीक है, तो ये जो 7-8 करोड़ रुपया है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना है कि अगर वीट की 1% यील्ड प्रोडक्शन कम हो जाए ना पाकिस्तान में, तो वो 16 अरब रुपए का नुकसान है, बल्कि इससे भी ज्यादा है। तकरीबन में भी ये 18 से 20 अरब रुपए का नुकसान 1% से हो सकता है। तो हमने ये नई वैरायटीज बनानी है, उसमें टाइम हमें ज्यादा लगता है, तो हम उसको कम करना चाहते हैं।
तो आप किसी भी अगर किसी पोश एरिया में चले जाएं तो आपको तो 6-7 करोड़ का एक घर नहीं मिलता आजकल, ठीक है। तो ये जो स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी है ये उस तरह गवर्नमेंट के लिए महंगी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप बड़े शहरों में देखें जैसे लाहौर है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है, तो यहाँ पे मेट्रो के बस स्टेशन बने हुए हैं जो कि बाहर से शीशे के बने हुए हैं। तो मैं बड़ी एग्जांपल कोड करता हूँ कि चूंकि वो इसी से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है, ग्लास हाउस है, एयर कंडीशन लगे हैं, बाहर जनरेटर भी लगे हुए हैं। तो ये इसका एक किसी भी एक पेशावर के, रावलपिंडी के या लाहौर के मेट्रो का जो बस स्टेशन है ना, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका। तो इसलिए ये इतना महंगा नहीं है। इट्स ओके। व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस और लिमिटेशन ऑफ स्पीड ब्रीडिंग? इसमें यही होता है कि आप गर्मियों के जब दिन होते हैं आपको टेम्परेचर मेंटेनेंस, आपने एयर कंडीशन यूज़ करने होते हैं। और अगर लाइट जाती है तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमें चूंकि हमने पहली फैसिलिटी बनाई है तो हमें ये भी पता है कि हमें क्या क्या चैलेंज उस वक्त जब बना रहे थे हमें तब क्या फेस करने पड़े, कि चूंकि पाकिस्तान में इसकी कोई भी ऑलरेडी ये नहीं था टेक्नोलॉजी, तो हमें जो उसके बनाने में लोगों को बताना पड़ा, बाहर से कॉपी करना पड़ा, जो चीज़ें हमने उसमें फेस की, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला। तो उसमें फॉर एग्जांपल ग्लास हाउस, स्पीड ब्रीडिंग ग्लास हाउस होता है, तो ग्लास हाउस की अगर छत को हम प्री फैब्रिकेटेड करते तो हम टेम्परेचर कंट्रोल इजी कर सकते, क्योंकि हमारे मुल्क में डे लाइट का इतना इशू नहीं है, हमारे पास सनलाइट अबंडेंट अवेलेबल होती है, हम वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छत उसकी शीशे की रखेंगे तो उसको कूल डाउन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इसी तरह लिमिटेशन आ जाती है कि आपका बिजली का खर्चा आता है, बिल आता है कि आपके, अब ये डिपेंड करता है उसके साइज पे कि आपने एक कमरे का साइज रखा है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमारे पास 6 चैम्बर्स हैं, 6 उसके कमरे हैं, जो कि स्पीड ब्रीडिंग चैम्बर्स हैं। तो एक ग्लास हाउस के अंदर एक गैलरी है जिसके 3 एक साइड पे, 3 एक साइड पे उसके स्पीड ब्रीडिंग चैम्बर्स हैं, जो कमरे हैं, ग्लास हाउस हैं। तो उसमें अगर हमें बिजली का ज़्यादा आता है तो आजकल आपको पता है हम सोलर यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, तो हमारा बिल सर्दियों में तो ज़ीरो होता है। तो अगर हम वो सोलर को और इंक्रीज़ करते हैं, तो जहाँ भी गवर्नमेंट के अब ऑफिसेज़ हैं उनमें भी वो उसको कह रहे हैं कि जहाँ पे आपको नई चीज़ डेवलप करते हैं तो वहाँ पे सोलर लगा लें। तो सोलर लगा लें तो आपका ये मसला भी हल हो जाता है। नेक्स्ट। जी, काशी व्लॉगर सर, व्हाट इज द टॉप व्हीट वैरायटीज आर बेस्ट फॉर स्पीड ब्रीडिंग? अच्छा, स्पीड ब्रीडिंग में आप बेस्ट वैरायटीज तो क्या हो सकती हैं, वो तो आपका अपनी चॉइस होती है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से पेरेंट्स चूज करने हैं। तो ये आपने कभी, आप अगर ब्रीडिंग पढ़े हैं तो आपके एक ब्रीडर्स इक्वेशन होती है, या हम उसे कहते हैं जेनेटिक गेन ओवर टाइम की एक इक्वेशन है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जो पेरेंट्स हों वो डाइवर्स हों, उसमें डाइवर्सिटी हो, उसमें फॉर एग्जांपल उसके अंदर वेरिएंस हो, और अगर आपके डाइवर्स पेरेंट्स होंगे तो आपकी जो पॉपुलेशन होगी उसमें से अच्छे रिजल्ट आएंगे। फॉर एग्जांपल एक डिजीज टॉलरेंट है या रेजिस्टेंट है, और अगर आपके पास दोनों डिजीज ससेप्टेबल हैं तो आपके पास बहुत फ्यू चांसेस है कि आप कोई अच्छी चीज़ उससे प्रोड्यूस कर सकें। तो जो टॉप की आपके पास क्या होता है कि हम बेसिकली हाई यील्डिंग को ही रिकमेंड करते हैं, को हाई यील्डिंग वैरायटीज जो आपके पास चल रही हो उन्हीं को फिर आप किसी और अच्छे से बेटर से क्रॉस कराएं, तो बेटर का बेटर से क्रॉस होगा तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट। जी सर, ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का, तो इसके बाद हम सेशन एंड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ओके जी, इब्रार वजीर पूछ रहे हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक considerations when implementing speed breeding in wheat breeding program, including infrastructure cost and labor requirements? अच्छा जी, इब्रार, सबसे पहले तो मैं ऑलरेडी भी ये मेंशन कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने ये 2000 में ये फैसिलिटी डेवलप, 2022 में हमने ये डेवलप की थी फैसिलिटी। तो उस वक्त हमारे कोई 5 से 6 करोड़ रुपए इस पे खर्चा आया था टोटल, ठीक है।
बाकी हमने इस पे सोलर भी इसके अंदर लगा हुआ है, हमारी बिल्डिंग पे, हमारे ऑफिस में। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं वहाँ से भी मैनेज होते हैं। तो आज के दिन में अगर इसी साइज़ की जिस तरह की मेरी वाली फैसिलिटी है, वो तो 10 से 12 करोड़ की बन जाती है। तो 10 से 12 करोड़ रुपया अगर आप उस क्रॉप पे काम कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, जो आपकी फूड सिक्योरिटी की क्रॉप है, जो आपकी स्टेपल फूड है, तो ये 12 करोड़ की तो आई थिंक कि जो लैंड क्रूज़र का जो सबसे टॉप वेरिएंट है, वो भी कोई शायद 15-16 करोड़ का है, ठीक है? इसी तरह अगर आप किसी अच्छी लोकेशन पे इस्लामाबाद में या डीएचए में या पेशावर में कोई अच्छी जगह पे अगर आप कोई घर बड़ा लेना चाहते हैं, तो वो शायद 7-8 करोड़ का तो एक प्लॉट भी नहीं आजकल आता अच्छा। तो इसलिए ये एक कंट्री के लिए जब आप एक नेशनल प्रोग्राम में हैं या प्रोविंशियल प्रोग्राम में हैं, तो ये जो इसकी इकोनॉमिक्स है, ये 10 8-10 करोड़, और आप छोटा भी बना सकते हो। आप 1 करोड़, 2 करोड़ से भी बना सकते हो। तो इसमें मेनली जो इक्विपमेंट है, वो थोड़ा महँगा है, और बाकी एयर कंडीशनिंग है इसकी। इसके अलावा तो इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। तो ये जो लाइट्स होती हैं, एलईडी ग्रो लाइट्स, ये तकरीबन आप कह लें कि जो एक लाइट है, ये 6-7 लाख की लाइट है। वो भी हमें डॉलर ऊपर चला गया, उस वजह से महँगी पड़ती है। जब मैंने खरीदी थी उस टाइम शायद एक लाइट जो है ना वो अ, हमारी थी 3-4 लाख की, और मेरी पूरी फैसिलिटी में जो है ना वो 1 करोड़ और 20 लाख की लाइट्स थी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर 3 करोड़ का था। तो कहने का मकसद ये है कि ये 5-6 करोड़ किसी प्रोविंस के लिए, किसी एक क्रॉप की ब्रीडिंग करने के लिए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप लोगों का खाली, मैं आपको जैसे इनको पहले एग्जांपल दे रहा था कि इस स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी पे एक जो मेट्रो का बस स्टेशन है, चाहे वो पेशावर का हो, लाहौर का हो, रावलपिंडी का हो, इस्लामाबाद का हो, उससे ज़्यादा इस पे खर्चा नहीं है। तो लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत है कि आप जो 7-8 साल लगाते हैं, 15 साल लगाते हैं एक वैरायटी डेवलप करने में, वो 7-8 साल में हो जाएगी। तो इस तरह ये इसका जो है ना कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। और नेशनल की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें उसके लिए तो बहुत बड़े-बड़े आपने देखा होगा बिल्डिंग्स बनती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी की बात करें तो शायद अगर मैं नॉलेज के मुताबिक है कि 10 से 15 हॉस्टल तो होंगे, तो किसी भी एक हॉस्टल से उसका आधा भी खर्चा नहीं है उसकी लाइट का और बाकी चीज़ों का। तो वो इतना बड़ा ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए इसको होना चाहिए, और कर भी रहे हैं। केपी में भी बन रही है, पंजाब में भी बन रही है, सिंध में भी बन रही है, तो अदर जो प्रोविंसेस हैं उसमें भी ये एस्टेब्लिश हो रही हैं फैसिलिटीज़। जी मुज़म्मिल। हेलो। जी सर सेशन एंड कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी एंड हो गए स्टूडेंट्स के, और माशाल्लाह काफी टाइम हो गया ज़्यादा ना, 1.5 घंटा हो गया। जी, जी, कोई बात, कोई बात। जी सर। तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सर आपके टाइम का, और माशाल्लाह बहुत थैंक अच्छे यू। सेक्शन में बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं माशाल्लाह। जी, 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह सर, तो शुक्रिया। किसी को भी कनेक्शन की ज़रूरत हो, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई मज़ीद इसकी गाइडेंस चाहिए, कोई किसी ने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करना हो, कोई इंटर्नशिप करनी हो, कोई रिसर्च करनी हो, तो आप वेलकम। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह Thank you so हाफिज़। much, sir. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Okay, Allah Hafiz. Thank you so much, sir. थैंक यू। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो पार्टिसिपेंट